Next chemical property of carbon, we will discuss about the special case of combustion, that is oxidation. So carbon gives carbon monoxide. As you know that when carbon burns with oxygen, it gives carbon monoxide as well as carbon dioxide gas, depending upon the amount of oxygen which is available. The oxidation of various hydrocarbons will give us the different kinds of products. We will discuss it one by one. जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि मीथेन है. मीथेन को जब हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमारे पास जो है क्या आता है, जब हम इसको बर्न करते हैं तो वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और अगर हम मीथेन को लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन मीन्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करें तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है विच इज़ ए पॉइजनस गैस. तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वी विल गेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल कि जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्कोहल जो है वो भी हमें जो है डिफरेंट जो है काइंड्स के प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि हम उसको ऑक्सीडेशन एल्कलाइन मीडियम में ले रहे हैं या एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं या कैसा जो है कैटलिस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं उसमें. इस फॉर्म बातों पे डिपेंड करता है. जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि हमारे पास जो है जब इथेनॉल को हम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक हाइड्राइड जो है जब हम ट्रीट करते हैं तो हमें जो है एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है. तो एल्डिहाइड जो है दैट इज CH3CHO और प्लस वाटर ऑब्टेन होता है. तो ये डिपेंडिंग अपॉन द यहाँ पर जो क्रोमिक एंड हाइड्राइड है इट इज़ एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. अल्कोहल को जब जो है हम अल्कलाइन मीडियम में ट्रीट करते हैं कि हम NO4 ले लेते हैं तो हमें एल्डिहाइड की बजाय जो है हम इथेनोइक एसिड जो है ऑब्टेन होते हैं. सी द रिएक्शन व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द अल्कलाइन मीडियम इट विल गिव यू इथेनोइक एसिड एंड वाटर. Next we are having the chemical reaction that is a addition reaction. Only the unsaturated hydrocarbon. Unsaturated means the compounds containing carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond undergo such type of chemical reaction. मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट में भी निकल प्लेडियम और ये जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो कैटलिस्ट क्या चीज़ है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. तो ये कई जो है कैटलिस्ट हम डिफरेंट रिएक्शंस में यूज़ करते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल कि हाइड्रोजन को जब हम इथीन में ऐड करें तो क्या होगा. इथीन कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड व्हेन इट इज़ treated with hydrogen in the presence of nickel catalyst, it will convert into its double bond will break up and converted into a saturated hydrocarbon that is ethane. I think you are able to understand that what is a addition reaction of hydrogen, that is adding of hydrogen in the presence of some catalyst. So let us try in this which among these hydrocarbons undergo addition reactions. So see, the few examples are given to you. Now you have to find out which one undergo addition reaction. तो हम कैसे पता करेंगे? हाँ जी, हाँ, हम इनके जनरल फार्मूला देखेंगे हर कंपाउंड का कि ये किस जो है कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. एल्केन है,
या एल्कीन है या एल्काइन है. इफ दे बिलोंग टू द अनसेचुरेटेड ग्रुप देन इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन. चलिए फिर देखें हम इनके जर्नल फॉर्मूला नोट करें तो हमें पता चल जाएगा. जैसे एल्केन है CnH2n+2, एल्कीन दैट इज CnH2n, और एल्काइन है CnH2n-2. तो हम यहाँ से देख सकते हैं. जैसे फर्स्ट देखिए C2H6, इट इज़ ए एल्केन. Then C3H8, it is again alkane. Then C3H6, it comes to the formula that is alkene. It is alkene. Then C2H2, it is again alkyne. And this one, fourth one, last one is the methane. It is alkane. So out of all these, only C3H6 and C2H4, that is propene and ethene, both ethine, undergo addition reaction. Is it clear that from their journal formula we can easily identify which subcompound will undergo addition reaction or not? Now addition to the ethine. Let us take the ethine. Now here this is the structure of carbon-carbon triple bond and containing the one hydrogen. Ethine, when it undergo hydrogenation, hydrogen is added to it in presence of nickel. So first of all, this triple bond will be break up into the double bond, and we will get ethene from it, and it will convert into ethene. Further it undergo reaction and we will get this double bond will break and we will get the ethane molecule C2H6. So step by step, triple bond first breaks into the double bond and double bond break into the single bond, and we obtain from the unsaturated hydrocarbon, it is converted into hydrocarbon into saturated hydrocarbon. So now we will discuss about a special kind of addition reaction. The such takes place addition reaction that is called the hydrogenation. That is, certain vegetable oils like groundnut oil, cottonseed oil, mustard oil, they contains mostly carbon-carbon double bond. So they are liquid at room temperature, so because of the unsaturation, and when they undergo hydrogenation, means hydrogen is added to them in presence of nickel and they convert into the vanaspati ghee. That process, that reaction is called hydrogenation. Hydrogenation of oils or fats, that is called hydrogenation reaction. Means converting of vegetable oil or refined oil into the vegetable ghee. That process is called hydrogenation. Now I think you can able to give the answer of this question. Yes, let us see the question. What is hydrogenation? Yes, hydrogenation is a chemical reaction, special chemical, that is addition reaction in which
vegetable oil is converted into vegetable ghee in presence of catalyst, निकल और प्लेटिनम। सो इंडस्ट्री में इसकी जो है बड़ी वाइड एप्लीकेशंस हैं। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स और घी हैं उनको इसी मेथड से कन्वर्ट किया जा